गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रेयर डिसीजेस। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ड्रग कंपनीज जो हैं उन्होंने मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया है। कम से कम 4 ऐसी डिसीजेज़ हैं, रेयर डिसीजेज़, जिससे जो है 100 टाइम्स जो है कॉस्ट इन रेयर डिसीजेज़ की जो है मेडिकेशन की वो कम हो जाएगी। तो एक स्पेशल इनिशिएटिव शुरू किया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा मेड इन इंडिया ड्रग्स को जो है रेयर डिसीजेज़ के लिए बनाने के लिए। तो 13 रेयर डिसीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, और सिकल सेल डिसीज़ भी जो है उसको भी प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। तो जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो अब टायरोसिनेमिया टाइप, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसके लिए गॉचर डिसीज़, जिसमें कि कुछ फैटी सब्सटेंसेस बन जाते हैं ऑर्गन्स में, जैसे स्प्लीन और लिवर में, उसके लिए विल्सन्स डिसीज़, जिसमें कि कॉपर की एक्यूमुलेशन होती है बॉडी में अब नॉर्मली, उसके लिए, और लिनॉक्स गैस्टॉड सिंड्रोम, जो कि चाइल्डहुड एपिलेप्सी वगैरह करता है, उसके लिए जो है ये ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। तो एक PLI टाइप स्कीम जो है वो मेडिसिन के लिए निकाली जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि रेयर डिसीजेज़ क्या होती हैं। तो रेयर डिसीजेज़ बेसिकली एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसकी जो प्रेवलेंस है वो कम होती है, मतलब कि बहुत ही कम लोगों को वो अफेक्ट करती है। 7,000 से 8,000 ऐसी रेयर डिसीजेज़ को अभी तक क्लासीफाई किया जा चुका है, जो कि जिसकी अभी तक सिर्फ 5% ही डिसीजेज़ की थेरेपीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है। और रेयर डिसीज़ मतलब कि 1,000 लोगों में सिर्फ एक पर्सन को ही वो डिसीज़ है। तो मेजॉरिटी जो ये डिसीज़ेज़ हैं, कहा जाता है कि ये जेनेटिक होती हैं। जो फील्ड है रेयर डिसीज़ का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसकी अर्ली डायग्नोसिस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इसके ऊपर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट्स भी बहुत कम होते हैं जो है रिसर्च करने के लिए। बहुत ही महंगी होती है इसकी जो ट्रीटमेंट है जो होती है। जैसे कि अगर हम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की ही लें, तो उसकी 16 करोड़ के आसपास की ट्रीटमेंट पड़ती है। ठीक है। तो इसीलिए जो है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज गवर्नमेंट ने 2021 में निकाली थी, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट 20 लाख रुपए तक का दिया जाता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर। अब इसमें नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री भी बनाई जा रही है रेयर डिसीजेज़ की। अर्ली स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल ट्विन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्वे ऑफ इंडिया और जेनेसिस इंटरनेशनल एक 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं इंडिया के लिए। तो जिसमें होगा क्या कि रियल वर्ल्ड एंटिटी की एक तरह से वर्चुअल डिपिक्शन होगी। हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन को देख पाएंगे। डिजिटल ट्विन्स बनाए जाएंगे मेजर सिटीज़ और टाउन्स के। अब सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? 1767 में इसको सेटअप किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। हमारी नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये कंट्री की, और ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका मीनिंग है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, और जिसमें कि इंडियन सिटीज़ के ऊपर डेटा बनाया जाएगा, दिया जाएगा। और ये रॉ डेटा जो है ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। 258 अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है इसमें ऑलरेडी ऑन बोर्ड की जा चुकी हैं, और इसमें डेटा जो है कई सेक्टर्स का होगा। जैसे एग्जांपल लें हम कि कितना डीजल कंजम्पशन हो रहा है सिटीज़ में, वाटर क्वालिटी के सैंपल्स कितने टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क हुआ एक, जिसका ये रिज़ल्ट है एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल। और इसमें 14 सेक्टर्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जिस पर डेटा इकट्ठा किया जाएगा वो यहाँ पर मेंशन है: डेमोग्राफी, इकोनॉमी, एजुकेशन, एनर्जी, एनवायरनमेंट एटसेट्रा। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेडियो गैलेक्सी। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली रिपोर्ट की है एक 63 न्यू जायंट रेडियो गैलेक्सीज़। तो ये रेडियो गैलेक्सीज़ जो है वो रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सीज़ या रेडियो लाउड गैलेक्सीज़ इनको हम कहते हैं। ये एक ऐसी एक्टिव गैलेक्सी होती है जो कि लाइट को रेडियो वेवलेंथ पर एमिट कर रही होती है रादर दैन विजिबल वेवलेंथ। तो ये होता कैसे है? जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं या और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन की वजह से ऐसा होता है, और नॉन थर्मल एमिशंस जो हैं जो है ये रेडियो गैलेक्सीज़ को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो पहली रेडियो गैलेक्सी जो डिस्कवर की गई थी और जो अभी तक सबसे ब्राइटेस्ट भी है वो है सिग्नस ए। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं रेडियो गैलेक्सीज़ की। पहली होती है कोर हेलो
रेडियो गैलेक्सीज, जो कि रेडियो एमिशन कर रही होती हैं एक रीजन में से, जो कि न्यूक्लियस होता है उस गैलेक्सी का। और एक होती है लोब्ड रेडियो गैलेक्सीज, जो कि ग्रेट लोब्स ऑफ रेडियो एमिशन करती हैं और ऑप्टिकल पार्ट ऑफ द गैलेक्सी से बियॉन्ड जाकर ये डिस्प्ले कर रही होती हैं अपने रेडियो एमिशंस को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू ऑब्जर्वेशनल स्टडी की गई है जिसमें देखा गया है कि एंटी रूमेटिक मेडिसिन जो हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती हैं, उससे ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज़ का भी जो है वो डेवलपमेंट को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जिसमें हमारी जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है गलती से, और उससे इन्फ्लेमेशन होती है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। खासकर ये आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, और जो लाइनिंग है जॉइंट्स की वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, डैमेज होने लगता है जॉइंट टिश्यू को। ठीक है, क्रॉनिक पेन, अनस्टेडीनेस रहती है, डिफॉर्मिटी आने लग जाती है। बॉडी का इम्यून सिस्टम जब खुद ही हेल्दी सेल्स को टारगेट करने लगेगा तो आपको उसको रोकना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस ली जाती हैं, जैसे कि डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिनको डीमार्ड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये भी टॉपिक आपके इकोनॉमिक सॉरी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ह्यूमन केसेस का आप देख रहे हो, चाइना में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के आ रहे हैं। तो ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है और इसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं कई फॉर्म्स में। तो ये होता कैसे है कि ये वायरस जो है वाइल्ड बर्ड्स में पाया जाता है, खासकर पोल्ट्री वाले एरियाज़ में। इसके अगर ये ह्यूमंस में आ जाता है तो ऑफ कोर्स इसको H9N2 वायरस कहते हैं। माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ और डेथ भी हो सकती है ऑफ कोर्स अगर ये सीवियर हो जाए तो। और हाइजीन मेंटेन करना ऑफ कोर्स लाइक इन एनी अदर वायरस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इन्फ्लुएंजा की हम क्लासिफिकेशन देखें तो A, B, C और D चार तरह का जो है WHO ने क्लासीफाई किया हुआ है। इसमें से A और B जो वायरसेस होते हैं वो एपिडेमिक लेवल पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 25 नवंबर को हर साल जो है ये डे मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशंस ने इसको डेजिग्नेट किया है ताकि अवेयरनेस जनरेट की जा सके विमेन की जो वायलेंस फेस करती हैं विमेन, उनके उस चीज़ के बारे में, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट की जा सके विमेन के लिए। ठीक है, 1981 से जो है विमेन राइट्स एक्टिविस्ट डिमांड कर रही थी कि जो है मीराबल सिस्टर्स, जिनको जो कि तीन डोमिनिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, उनका मर्डर कर दिया गया था 1960 में वहाँ के रूलर द्वारा। तो उन 1981 से जो है डिमांड की जा रही थी। तो फाइनली UN जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 1993 को ये डिक्लेरेशन किया एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का, और 7 फरवरी 2000 को जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के बाद ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया 25 नवंबर को एज दिस डे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 17th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में कंडक्ट किया जा रहा है। ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी और नेपालीज आर्मी के बीच में होती है, और ये इंडियन आर्मी की कंटिजेंट जो है वो इसमें कुमाऊं रेजिमेंट की जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। इस एक्सरसाइज में इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, माउंटेनस टेरेन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस चार्टर की जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उसके अराउंड ही जो है ये एक्सरसाइज की जाएगी। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is rare diseases. This topic is important for your social issues. So Indian drug companies have started manufacturing medicines for at least 4 conditions, and now so these are of course rare diseases, and this will bring down the cost by up to 100 times. Okay, so Union government has announced a special initiative for manufacturing 4 types of homegrown made in India drugs for these rare diseases for the first time. So government is said to be prioritizing 13 rare diseases and sickle cell disease also. So the available generic drugs will be made available for tyrosinema type, Koch's disease, Wilson's disease, Lennox-Gastaut syndrome also. Okay, so tyrosinema type is basically a rare autosomal recessive genetic metabolic disorder. Okay, so and it happens due to the problem
in breaking down of the amino acid tyrosine. There is Gaucher's disease, which results in the buildup of certain fatty substances in our organs like spleen and liver. Wilson's disease is caused by abnormal copper accumulation in the body, and this Lennox-Gastaut syndrome is a rare but severe form of childhood epilepsy. So government is working on a PLI type scheme for these medicines. And if we look at the rare diseases, then they affect a small number of people compared with other prevalent diseases in the general population. So there are about 7,000 to 8,000 rare diseases classified as of now, and only 5% of them have therapies available. Okay, so a condition which is prevalent in less than uh, one person in 1,000 population can be considered as a rare disease. So majority of these rare diseases are believed to be genetic. Okay, so what are the challenges associated with such diseases? Well, because this rare diseases have a field which is very complex and heterogeneous, so early diagnosis becomes a major challenge. So they are also difficult to research upon because the patient's pool is also very limited. So the treatment cost is also exorbitant. For example, the treatment for spinal muscular atrophy costs about 16 crore rupees. And if we look at the national policy for rare diseases, then financial support is being provided up to 20 lakh rupees under the umbrella scheme of Rashtriya Arogya Nidhi. And the policy also envisages creation of national hospital based registry of rare diseases. The policy also focuses on early screening and prevention through primary and secondary healthcare infrastructure. So the next topic is digital twin. This topic is important for your governance section. So recently, Survey of India and Genesis International, which is a leading mapping company, has announced a strategic tie-up for three-dimensional digital twin mapping program in India. So this will be creating a virtual depiction of a real-world entity, either be a let's be a product, let it consider to be a product, process, person, or location. And this will help policymakers to understand how infrastructure will function in different situations, like in high footprint events, in if the population gets increased, or natural disasters. So this will create digital twins of major cities and towns, and all will be having highly accurate navigable maps. So if we look at the Survey of India, then it was set up in 1767. It is the national survey and mapping organization of our country under the Department of Science and Technology. It is also the oldest scientific department of the Government of India. So the next topic is Amplify 2.0 portal. This topic is important for your governance section. So recently, Union Ministry of Housing and Urban Affairs have launched this Amplify 2.0 portal. So this aims to provide data on Indian cities, and it is going to provide raw data from Indian cities available to on a single platform. So 258 urban local bodies have already been onboarded. So there is a lot of data, but let's see that the data on how much diesel is being consumed, so how much samples have been tested for water quality in a particular area, is all such data would be made available on this portal. So this is the outcome of the Urban Outcomes Framework 2022, which has been developed by Ministry of National Institute of Urban Affairs and PwC, PricewaterhouseCoopers India. So 14 sectors have been identified to bring this data on this portal. For example, demography, economy, education, energy, environment, etc. So the next topic is radio galaxy. This topic is important for your science and tech section. So astronomers have recently reported the discovery of 63 new giant radio galaxies, so which are also known as radioluminous galaxies or radio loud galaxies, which are a particular type of active galaxy which emits more light at radio wavelengths than at visible wavelengths. So this happens through the interaction between charged particles and strong magnetic fields, and these radio galaxies are driven by non-thermal emissions. Okay, so first radio galaxy which has been discovered, and it is still the brightest, is called the Cygnus A. Broadly, we can classify these radio galaxies into two classes. First, of course, is the core halo radio galaxies, which exhibit this radio emission from around the nucleus of that galaxy. The lobed radio galaxies display these lobes of radio emission beyond the optical part of the galaxy. So the next topic is rheumatoid arthritis. This topic is important for your social issues. So according to new observational studies, anti-rheumatic medicines which are used to treat uh,
Rheumatoid arthritis may help in reducing the development of autoimmune thyroid disease also. So, rheumatoid arthritis is an autoimmune and inflammatory disease, which means that the immune system starts attacking healthy cells in the body by mistake, and it causes inflammation in the affected parts of the body. So, it mainly attacks the joints, and the lining of the joint becomes inflamed. It causes damage to the joint tissue, and this the tissue damage can also be caused by long lasting and or chronic. The tissue damage can also cause long lasting or chronic pain, and it can even lead to deformity of the joint. So the body's immune system is targeting the healthy cells. That's why certain forms of medications are required to slow down this disease and prevent the deformity in of the joints. So these medications are called the disease modifying antirheumatic drugs. So the next topic is avian influenza virus. This topic is important for your social issues. So recently there has been an outbreak of human cases of avian influenza virus called the H9N2 in China, and we have seen several videos of it on social media also. So avian influenza virus is also a subtype of influenza, and it is a virus which causes human influenza as well as bird flu. So this virus is found worldwide in wild birds, and it is endemic to poultry in many areas. So it has symptoms like mild flu or eye inflammation, but in severe cases it can also lead to acute respiratory disease or even death. So basically, like in tackling any other viral disease, you have to maintain personal and hand hygiene. So if we look at the influenza, then the WHO has classified four types of influenza viruses: A, B, C, and D, and only the A and B viruses are known to cause epidemics. So the next topic is International Day for the Elimination of Violence Against Women. This topic is again important for your social issues. So International Day for Violence Against Women is observed worldwide on 25th November each year. So United Nations has designated this day to create awareness uh, for the different types of violence faced by women, and also to promote advocacy and creating better opportunities for women. This year's the theme was Unite Invest to prevent violence against women and girls. And since 1981, the women rights activists were demanding the homage to Mirabal sisters, who were brutally murdered in 1960 by Dominican by Dominican country's ruler Rafael Trujillo. So UN General Assembly met in 1993 and adopted this declaration on the elimination of violence against women, and then by the year 2000, General Assembly officially designated this 25th November as the International Day for Elimination of Violence Against Women. So the next topic is exercise Surya Kiran. This topic is important for your security section. So 17th edition of joint military exercise Surya Kiran will be conducted in Pithoragarh district of Uttarakhand uh, between 24th November to 7th of December. So this is a joint military exercise between Indian Army and Nepalese Army, and this is an annual event, and it is conducted alternatively between the two countries. So Indian Army contingent is being represented by Kumaon Regiment, and the aim of this exercise is to enhance interoperability in jungle warfare, counterterrorism operations in mountainous terrains, humanitarian assistance, disaster relief, basically under the United Nations Charter on Peacekeeping Operations. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.